Hello everyone, welcome to my channel Harman Study Vlog. Today we discuss the topic serum phosphorus estimation. So first start with introduction. Phosphorus is an essential mineral nutrient present as inorganic phosphate primarily in the bones and teeth and as organic phosphate in high energy molecules such as ATP, muscle, neutral tissues and phosphate esters. सो जो फॉस्फोरस है वो इसेंशियल मिनरल न्यूट्रेंट है जो प्रेजेंट है एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रीमैरली इन द बोन्स एंड टीथ एंड एज अ ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है in high energy molecules such as ATP, muscle, neutral tissue and phosphate esters. A small but significant amount of phosphorus also present in plasma as inorganic phosphate. So कुछ क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी बट सिग्निफिकेंट अमाउंट जो फॉस्फोरस की है वो प्रेजेंट है इन प्लाज्मा एज इनऑर्गेनिक phosphate. It plays an important role in formation of bone and teeth, production of high energy phosphate compounds such as ATP, ADP, etc., synthesis of nucleic acids such as DNA and RNA. So ये रोल important रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन एंड टीथ में production of high energy phosphate compounds such as ATP. ATP is adenosine triphosphate and ADP is एडिसनल डाईफॉस्फेट. सो इनकी भी प्रोडक्शन में वो रोल प्ले करता है. देन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए एंड आरएनए. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो इनको भी डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Then next is estimation of serum phosphorus. Methods name modified Gomoris method. Then principle in acidic medium inorganic phosphorus combined with ammonium molybdate to form phosphomolybdate. Then acidic medium में जो inorganic phosphorus है वो combine कर रहा है ammonium molybdate. Then क्या form कर रहा है phosphomolybdate. The phosphomolybdate react with metol and is reduced to a molybdenum blue complex. देन जो फॉस्फोमोलिब्डेट है वो रिएक्ट कर रहा है मेटोल के साथ एंड इज रिड्यूस टू अ मोलिब्डम ब्लू कॉम्प्लेक्स. द इंटेंसिटी ऑफ मोलिब्डम ब्लू कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द सैंपल. सो जिसकी इंटेंसिटी है मोलिब्डम ब्लू कॉम्प्लेक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो प्रेजेंट है इन द सैंपल. The intensity is measured at 650 nanometer by a calorimeter. So जो इसकी intensity है measure करते हैं 650 nanometer by a calorimeter. Then Dawn equation is related to the principle. So see first equation, inorganic phosphorus combined with ammonium molybdate in acidic pH. Then उसने क्या form किया phosphomolybdate. Then second equation, द फॉस्फोमोलिब्डेट वो रिएक्ट कर रहा है मिटोल के साथ एंड इज रिड्यूस टू अ मोलिब्डम ब्लू कॉम्प्लेक्स. द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट टेस्ट ट्यूब स्टैंड, सीरोलॉजिकल पेपर्स, वाटर बाथ और इंक्यूबेटर, क्लोरीमीटर, reagent टेस्ट किट एक्सेट्रा. Then reagents, the estimation kit has 4 reagent. Reagent 1 acid reagent, reagent 2 molybdate reagent, reagent 3 reducing agent, reagent 4 standard reagent. Then procedure, take a test tube stand and place 3 clean and dry test tube. Label the tube as test, standard and blank. Pipette in the label tube as follows. So see in the table, first reagent sample, then test, standard and blank. So first 0.5 ml acid reagent in all the tubes, then 0.5 ml molybdate reagent in all the tubes, then serum sample 0.05 ml in test tube, standard reagent 0.05 ml in standard tube, 0.05 ml distilled water in blank tube, then last 0.5 ml reducing agent in all the tubes. Mix well and keep at room temperature for 5 minutes. Measure the color intensity of test and standard against blank at 650 to 680 nanometer. Then calculation, serum phosphorus milligram per dl, OD of test upon OD of standard, multiply concentration of standard reagent.
Then normal values. Serum phosphorus milligram per dl in adult 2.5 to 5.0 milligram per dl, or in children 4.0 to 7.0 milligram per dl. Then clinical significance, an increased level of serum phosphorus is seen in renal disease, hypopathism, liver disorder and excessive vitamin D intake. So जो इसका increase level है serum phosphorus का वो seen होता है जब कोई renal disease हो जाती है, hypopathism केस में, liver disorder, और जब excessive vitamin D intake हो जाता है तब इसका level increase हो जाता है. A decreased level of phosphorus is seen in the rickets, osteomalacia, vitamin D deficiency, hyperparathyroidism, renal disorder and in diabetic coma. So जो इसका decreased level है phosphorus का वो हमें seen होता है in rickets. Rickets is softening and weakening of bones. This is due to the deficiency of vitamin D. Then osteomalacia refer to softening of bones, or it is also caused by deficiency of vitamin D. Then next, vitamin D deficiency, then hyperparathyroidism, renal disorder and in diabetic coma. So this is all about the serum phosphorus estimation. So please subscribe, like, share, comment on my channel. Thanks for watching.